Hello everyone, welcome to my YouTube channel CognitiveCoders. So today in this video we'll see how to skip garbage lines from PySpark Dataframe. So basically हम लोग जब ऑन प्रीम डेटाबेस से डेटा को रीड करते तो बहुत सारा ऐसे सिचुएशन होता है कि बहुत गarbage लाइन्स हो जाता है कि जो स्कीमा हम लोगों का है उसको छोड़ के भी बहुत गarbage लाइन रहता है जिसको स्किप करके हम लोगों को डेटा रीड करना पड़ता है. So in that kind of situation what we need to do that we will see. Okay, you can apply I'm doing in one approach. If you want you can also apply your approach, and you can also mention in this video that we also can apply other approach also. So today we'll see one approach. Okay, I'll show you one approach. If you think you know better than my approach, you please comment on the comment section. Okay, that approach. Okay, so let's go back to my notebook. I'm in my notebook. Okay, so first what we'll do. So here I have created one sample data file. Okay, so I have stored it as a CSV file. So whenever I am reading it, so you can see in my data file, data is like this. Okay, I'm showing you data would be like this. If the data is like this, and in this case, what we will do? So the the header is here, and after that these are the main data. Okay, before the header we have few garbage lines. So this kind of garbage lines, how it can skip to during the creation of Spark data frame. Okay, so whenever we are reading this as a CSV, this will read like this because we have the from the in the first line we have only one data, so it will only read this. It will only this one single column. Okay, so in this situation, what we will do? We need to skip the first three lines first. Okay, L1, L2, L3. Okay, so for this case, we'll take it to we'll take it to RDD framework. Okay, RDD framework को यहाँ पे यूज करेंगे. तो बेसिकली RDD को यूज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? RDD स्पार्क कॉन्टेक्स्ट के थ्रू स्पार्क कॉन्टेक्स्ट के थ्रू RDD को क्रिएट करेंगे. ठीक है, RDD एंड टेक्स्ट एज ए टेक्स्ट फाइल इसको रीड करेंगे. ठीक है, तो इफ आई विल रीड इट एज ए टेक्स्ट फाइल देन सो यहाँ पे RDD को देखने के लिए RDD डॉट का लिख करना पड़ेगा. ठीक है, header too. So let me check what this. Okay, यहाँ पे in RDD there is no header. So remove this. Next. Okay, so I'm getting my data in each and every single line. Okay, as an array object. Okay, each and every array object, different array object. तो अभी मुझे क्या करना है? अभी मुझे ये एक एक लाइन को पढ़ना है क्योंकि मुझे फर्स्ट थ्री लाइन को डिलीट करना है, फर्स्ट थ्री लाइन को स्किप करना है. तो स्किप करने के लिए पहले तो मुझे ये लाइन को 1 2 3 करके पढ़ना है क्योंकि मुझे लाइन नंबर थ्री तक मुझे इसको स्किप करना है. तो पढ़ने के लिए मुझे लाइन को एज ए नंबरिंग करना पड़ेगा. तो फॉर द नंबरिंग पर्पस विल यूज zip with index function. Okay, for DD. So what it will do, I will see zip with index. If I will apply it here, so what it will do, it will create one unique number. Okay, sequence number for each and every
each and every array element. Okay, RDD array element. Okay, then so for skipping these first three lines, we can simply use filter function here. So how to use the filter function? How to use the filter function I have already shown in my playlist. This playlist here I'm showing you. Here is my PySpark and database playlist. Here you will get all these function related videos. Please go through that. I will not explain here. Okay, तो ये filter function के बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल से मैंने बता चुका हूँ. Go and watch it. So now what we will do, will now use filter. For using filter, it is to use the lambda function. Lambda at x equals to x. X. So what we will read? We'll read the first index. Based on first index we will read. Okay, तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर दे देता हूँ. इंडेक्स नंबर 1 पर एलिमेंट का यहाँ पे एलिमेंट इटरेट होगा. यहाँ पे एलिमेंट का फर्स्ट इंडेक्स यहाँ पे दिखेगा. अगर फर्स्ट इंडेक्स ग्रेटर देन 3 है, क्योंकि मुझे गेट नॉट ग्रेटर देन 3, मुझे 2 तक करना है, क्योंकि यहाँ पे 3 मीन्स 2 इंडेक्स. greater than 2 या तो मुझे 2 करना है. ठीक है, if greater than 2 then we can collect it. So for collecting it, okay, now I am getting my proper data. Okay, now what we will do, now we don't need this zip index code. Okay, this sequence number. So for removing this, we can use map function. So map function also what it will do and how we can use, I have shown it here. Okay, you go and you can watch it. Okay, so I will not play it here. Okay, so map function map function में भी लैम्डा फंक्शन को यूज करेंगे इटरेट करने के लिए. ठीक है, यहाँ पे भी x के साथ करूँगा. तो मुझे ओनली इंडेक्स का फर्स्ट ये एक एरे एलिमेंट का फर्स्ट इंडेक्स से यहाँ से आता है फर्स्ट इंडेक्स से, और ये नंबरिंग सेकेंड इंडेक्स से. तो मुझे क्या रखना है, ओनली फर्स्ट इंडेक्स को रखना है, सेकेंड इंडेक्स को हटाना है ईच एंड एवरी एलिमेंट से. तो ओनली विल रीड द फर्स्ट इंडेक्स हियर मैपिंग के टाइम में. ओके, तो मैपिंग के टाइम में ओनली मैं फर्स्ट इंडेक्स को अगर रीड करता हूँ तो यहाँ पे मुझे डेटा इस तरह से मिल जाता है. ठीक है, तो नाउ व्हाट विल डू, okay, now I'm getting the data like this. Okay, so मुझे क्या करना है, अभी मुझे एक डेटा को तो अभी मिल गया. मुझे मेरा ओरिजिनल डेटा जो है मिल गया, मेरा फर्स्ट 3 लाइन स्किप हो गया जो गार्बेज लाइंस था. अभी मुझे ये पूरा डेटा को एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है. तो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे ये एक एक कॉलम को सेपरेटली मुझे दिखाना पड़ेगा. ठीक है, तो एक एक कॉलम को सेपरेटली मुझे दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट फंक्शन को यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तो डॉट स्प्लिट, तो एक एक सेपरेट कॉलम को मैं स्प्लिट फंक्शन को यूज करके सेपरेट करूंगा. तो इसके लिए मैं लैम्डा फंक्शन में जो एक एक एरे का एलिमेंट पास होगा तो वही यहाँ पे स्प्लिट भी हो जाएगा. ठीक है, तो और स्प्लिट के लिए आर्गुमेंट क्या होगा, फिर स्प्लिट हो जाएगा. ठीक है,
तो अभी इसको रन करके देखते हैं। हाउ यू कैन सी now we got each and every different array. Okay, so now what we will do, now what we will do will अभी इसको मैं डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकता हूँ यूजिंग द 2df फंक्शन। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो इसको आरटीडी में स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, तो आरटीडी में स्टोर कर लेता हूँ। पहले कलेक्ट फंक्शन हटा देता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट कॉलम में मैं परफॉर्म करूँगा। तो what we will do now, final RTD, final नो df बोल के मैं करता हूँ df इक्वल टू, अभी तो डेटा में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो RTD डॉट 2df फंक्शन का यूज करूंगा यहाँ पे। 2df डॉट शो करूंगा। So now now I have created the data frame here. तो पर डेटा फ्रेम तो मैंने क्रिएट कर लिया, पर यहाँ पे मेरा जो हेडर है ये मुझे ये ऐसे ऐसे करके हेडर आ रहा है, और हेडर मेरा जो मेन हेडर है वो ऐसे डेटा रीड हो रहा है। तो इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए पहले मैं काम करता हूँ, इसके लिए थोड़ा ट्रिकी लॉजिक यूज करना पड़ेगा। मैं हेडर को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ पहले तो हेड बोल के मैं लेता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ। तो ये आरडीडी में कन्वर्ट करने से पहले ही, मैं आरडीडी से डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने से पहले ही मैं इसको कलेक्ट फंक्शन यूज करके इसको कलेक्ट कर लेता हूँ। क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ एक बार दिखा लेता हूँ। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मेरा फर्स्ट वाला एरे में ही मेरा है पूरा हेडर है, तो फर्स्ट वाला एरे का इंडेक्स मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, तो यहाँ पे स्टोर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा फर्स्ट इंडेक्स स्टोर, या इसको मैं हेडर बोल के स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो ये सेम हेडर अभी मैं सेम हेडर को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये हेडर, तो ये एज ए हेडर को रीड कर लेगा। सॉरी, यहाँ पे केरा आ रहा है, लेट मी चेक। Okay, now it is coming. I don't know what was the error. I have not changed anything. Once again run the last wala, then I can run it. तो ठीक है, यहाँ पे हेडर में स्टोर, ओके, मैं हेडर का वेरिएबल देने के बाद वो ये सेल को रन करना भूल गया था। ठीक है, अभी तो ये आ रहा है। ठीक है, पर ये अभी इसको मुझे हटाना है, क्योंकि ये हेडर को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया, पर ये अभी डेटा से मुझे हटाना है। तो for this thing what will do, तो इसके लिए मुझे ये वाला फर्स्ट रो को मुझे स्किप करना पड़ेगा। तो that is also simple. We can do one thing. I'm showing you. तो skip बोल के एक वेरिएबल लेते हैं, वो आप there df को df.fast, okay,
अगर मैं यहाँ पे df पहले तो मैं दिखा लेता हूँ, यहाँ पे df डॉट फास्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है। हम्म, नहीं, मैं आरडीडी को यहाँ पे एक मिनट यार, अगर मैं यहाँ पे आरडीडी को फास्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है। ठीक है, आरडीडी को मैं फास्ट करता हूँ तो मुझे ये मिलता है। हम्म, एक मिनट। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये थोड़ा थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा अपना लॉजिक यहाँ पे देना पड़ेगा, तो ये ऑल ऑटोमेटिकली स्किप कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, बस यहाँ पे ये हेडर को लेके मैंने जो एक पहला वाला जो मेरा हेडर है, ये इसको स्टोर किया है हेडर हेडर वेरिएबल में, तो उसको ही यहाँ पे यूज कर दिया। तो वो आरडीडी को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने से पहले मैंने इसको एक फिल्टर चलाया, तो वहां पे मेरा जो ये हेडर है वो वाला रो को छोड़ के बाकी सबको यहाँ पे फिल्टर किया। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने बाकी सब मतलब ये तीनों रो को मैंने यहाँ पे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया और इसका हेडर ये सेम हेडर वाला मेंशन कर दिया। तो उसके बाद ये सिंपली डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। ओके, I think you have understood the concept. Okay, you guys please perform this uh, by your own notebook. Okay, तो अगर इसको प्रैक्टिस करोगे तो पूरा पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कहाँ पे क्या मैं कर रहा हूँ। ठीक है, कहाँ पे क्या एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ और कौन सा वाला कहाँ पे फिल्टर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पूरा प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंडेंट है। So I think you have understood the concept. Okay, if you have any kind of doubt, please do comment on the video comment section. And this kind of real-time scenario I'll continuously uploading in my channel. Please do like, share, and subscribe my channel, Cognitive Coders. Okay, you guys support is really much required. I have already uploaded 52 videos. Okay, there are many videos on PySpark data engineering related, and now I am uploading real-time scenarios also. Okay, please stay connected with us and support us. You guys will be really get the better content based on the market wise. Okay, if you guys will be with us. Okay, so please stay connected and support us. Once again, I'm telling. Thank you for watching our video. Bye.